Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Keep the charts clean. We'll start in 2 minutes. Good evening, Imran. Good evening, Sumit. Good evening, Nilesh. Good evening, Nitin. सर इंडियन मार्केट्स में प्रीमियम बढ़ा ही नहीं. क्या बात कर रहे हो? 5 रुपए का प्रीमियम 50 रुपए गया. कुछ भी. क्या कुछ भी. संडे वीडियो आएगा ना, साइडवेज सेशन के ऊपर देख लेना, लाइव है उसमें. मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, सेलिंग प्रेशर के साथ कंटिन्यूटी में ब्रेक आई, उसके बाद फेक ट्रैप किया, सब एक्सप्लेन्ड है लाइव पे. सर नेक्स्ट गोल्ड मूव ಏನು ಸರ್? ಸರ್ ಮೊದಲು ಕಲೀಲಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಪ್ಲೀಸ್, देन एग्जीक्यूशन. ओके, स्टार्टिंग विद डेली टाइम फ्रेम. वो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अंजलि. दैट यू हैड द फियर इन यू, सो आई कांट डू. कल भी इसका मूवमेंट बुलिश ही है. सही है. सही में है. नो डाउट. स्टार्टिंग विद द मूवमेंट्स गाइस. ये हमारा प्रीवियस डिमांड था, प्रीवियस डिमांड के साथ ये हमारा इंड्यूसमेंट रेंज. रिजेक्शन कितना लिया मार्केट में? जितना हमारा इंड्यूसमेंट रेंज में रिजेक्शन था उतना ही रिजेक्शन लेके मार्केट कंटिन्यू में ब्रेक किया था. उस कंटिन्यूटी में मूवमेंट डिमांड क्लोजर के साथ अगेन कंटिन्यूड द रैली. सो 150% रिजेक्शन, बायस अलोकेशन पॉइंट उधर से ही शुरू हुई थी. राइट, पोस्ट दैट हमें क्या करना है? सप्लाई को आइडेंटिफाई करना है. ये हमारा सप्लाई है. इस सप्लाई के साथ रिट्रेसमेंट कितना लिया मार्केट ने? जितना हमारा प्रीवियस पॉइंट ऑफ एक्शन में यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखी है उतने का ही रिजेक्शन के साथ मार्केट कंटिन्यूड द मूवमेंट. राइट, पोस्ट दैट व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट आई विल बी लुकिंग एट द करंट कंडीशंस. जितना प्रीवियस सप्लाई है, प्रीवियस सप्लाई के साथ अलोकेशंस, उस अलोकेशन के साथ मूवमेंट टिल द डबलनेस. एट द करंट पॉइंट ऑफ एक्शन हमारा डेली टाइम फ्रेम का मैथमेटिकल नंबर आके 2078 का था. So we will keep the same number at the current state of actions till we look for the next. कहा गया? 3078.325. राइट, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टारगेट है इन द डेली टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के लिए. पोस्ट दिस व्हाट आर द मेन स्टेप्स दैट विल बी फॉलोइंग? वी विल बी स्टार्टिंग विद 4 आवर टाइम फ्रेम. 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्टार्टिंग विद द करंट सप्लाई पॉइंट.
ये हमारा सप्लाई है, मार्केट में रिजेक्शन कितना लिया, जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई यहाँ पे बिल्ड हुआ था उतना ही रिजेक्शन के साथ कंटिन्यूटी में मार्केट आई थी, राइट। पोस्ट दैट ब्रेक मार्केट ने जितना सप्लाई यहाँ पे जनरेट किया था उतने का ये मूवमेंट, फिर से रिजेक्शन, रिजेक्शन कितना लिया यहाँ पे, जितना रेड कैंडल का अलोकेशन पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर है उतने का ही रिजेक्शन लेके मार्केट कंटिन्यूड द मूवमेंट, right? Post that, whatever the supply allocation was there, multiplied, allocated post the retracement. Scenario one, double it, 150% rejection. Scenario two, we will look for the next plan of action. Okay. From this point of actions, what are the major steps that we'll be looking? Whatever the rejections we are having at the current state of actions, that will be taken under the consideration of the movement. At the current stage, with this point of actions, we'll be marking the same to check the scenario 1 allocation. Yes, there is a break. With the break continuity, 200% rejection, right? Post 200% rejections, what are the next steps that we'll be following at the current state of actions? जितना भी movement हमारा previous में generate हुआ है यहाँ पे, उसका ही movement continuity में allocations में चलेगी, उसके साथ multiplied version में allocate कर सकते हो. Do we have a rejection? Yes, we do have a rejection in 4 hours. So let's mark the rejection to look for the next, right? Post rejection, market ने rejection कितना लिया, जितना हमारा rejection point of action in the previous demand range में थी उतना ही rejection लेके market continued with the inducement. Inducement में जितना movement हमारे पास green candle में था उतना ही movement के साथ 150% rejection के साथ continuity में आई थी. Post that, what are the next steps that we'll be following at the current state of actions? We'll do the mathematical numbers. At the mathematical numbers, what are the numbers that we are getting at the current stage? The current stage mathematical numbers we are having is 2999.786. 2999.786, right? Post the mathematical numbers, what are the next steps that we'll be looking at the current point of actions? We'll be allocating the demand at each and every point of action to look into the next. So in this scenario, this is my first demand. इस डिमांड के साथ रिजेक्शन कितना लिया मार्केट में, जितना लास्ट में हमारे पास डिमांड क्रिएट हुई थी उतना ही सप्लाई यहाँ पे दिखने को मिलेगी, राइट? सो जैसे ही वो सप्लाई अलोकेशन यहाँ पे दिखने को मिला, जो भी हमारा डबल क्वांटिटी एट द करंट स्टेज है, विल मल्टीप्लाई इट, विल अलोकेट इट टू द नेक्स्ट. कंटिन्यूटी में ब्रेक हुआ है, सो विल मल्टीप्लाई इट, 150% रिजेक्शन देखेंगे. पोस्ट 150% रिजेक्शन, वी कैन लुक इनटू द सिनेरियो 2, जितना हमारा डिमांड यहाँ पे बिल्ड आउट है उसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जितना हमारा प्रीवियस रिट्रेसमेंट पॉइंट ग्रीन कैंडल की बनी थी उसी के हिसाब से रिजेक्शन, रिजेक्शन के साथ कंटिन्यूटी मैप अप करेंगे, राइट? पोस्ट दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्शन, डबल इट, विद डबलिंग अलोकेशन मार्केट कंटिन्यू किया था, पोस्ट कंटिन्यूटी डबल, market took the rejection from 200%. Post that, what are the steps that we'll be working at the current state of actions? Demand कितना generate हुआ है यहाँ पे, जितना हमारा previous body allocation है उतना ही allocation के साथ market में movement generate होते हुए दिखी at the first state of actions. Post that, जो हमारा previous supply allocation point है, that will act as one. That supply will be taken under the consideration at the current state of actions, right? Post that, हमारे को एक retracement मिला था. What is the retracements that current we will be working on? The retracement will be working on step one. This, the entire movement will be carry forwarded with the wick range multiplied by 2, allocated 200% rejection लिया था. 200% rejection लेने के साथ what are the next steps the market tend to do? जितना हमारा previous supply वो previous supply allocation 1, market is in continuity without a retracement, so this is the plan of action. इसके साथ क्या हमारे पास 150% range है? Yes, definitely. So this is the 150 range what we are currently having in 4 hours. Right, इसके बाद what are the next steps that we'll be following? The next steps will be coming down to 1 hour. In 1 hour, what are the major steps? We'll be looking at the current conditions. We will just look into the perspectives of the previous and look for an allocation. Do we have an inducement risk range?
Do we have an inducement range? Yes, we do. Do we have a buying pressure? Yes, we do have it, right? So how do you look into the structure? Buying pressure one, buying pressure two. सेलिंग प्रेशर जहां जहां पे आया है सेलिंग आई है, जहां जहां पे सेलिंग नहीं है, प्रेशर्स नहीं है, वहां वहां पे प्रेशर्स के हिसाब से नहीं बनी है, right? Each and every point of action wherever there was a selling pressure, market gave a movement towards the down. जहां जहां पे प्रेशर ऊपर के लिए था, वहां वहां पे मूवमेंट ऊपर के लिए बनी है, right? So with this point of actions, what are the steps that you will be looking at the current stage? This will act as your one point. Post that मल्टीप्लाई करके जितना रिजेक्शन पॉइंट ऑफ एक्शन है वहां से मैप करो, रिजेक्शन कितना लिया, जो प्रीवियस डिमांड ऑफ एक्शन है उतना ही रिजेक्शन के साथ कंटिन्यूटी, सो दैट विल एक्ट एज योर करंट। विद द करंट मूवमेंट कितना मूवमेंट में चला, जितना हमारा प्रीवियस कैंडल ऑफ ऑलोकेशन है ग्रीन का, उतना ही मूवमेंट यहाँ पे आपको दिखने को मिली ऑन द डबल रिजेक्शन, राइट? पोस्ट दैट व्हाट आर द स्टेप्स दैट विल बी लुकिंग अगेन, जितना हमारा प्रीवियस अलोकेशन पॉइंट में रिट्रेसमेंट जनरेट हुआ है, that will act as your current retracement. With the current retracement जितना मोमेंट हमको इस पॉइंट ऑफ एक्शन से इस पॉइंट ऑफ एक्शन टिल द लास्ट रिट्रेसमेंट है, उतना ही मूवमेंट हमको कंटिन्यूटी में दिखने को मिलेगा। सो दिस इज पॉइंट नंबर वन, right? Multiply the version with the multiplied version allocated. We have a rejection, yes we do. So mark the level of the rejection. Post rejection marking, what did market tend to do? Market created a wick and came downwards, excuse me, sorry, मार्केट ने विक क्रिएट किया, विक क्रिएट करके नीचे के लिए आया, क्योंकि हर एक रिटेलर्स यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है करके ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे। विद दैट पॉइंट ऑफ एक्शन एवरीवन गॉट ट्रैप, राइट? विद दिस ट्रैप मार्केट कंटिन्यूड द मूवमेंट। सो सुबह के सेशन में जो एक्सप्लेनेशन दे रहा था वही यहाँ पे हुई है, उसके साथ कंटिन्यूटी। आज के रील जो आया है वो भी इसी के बेसिस पे थी, on the trap, right? Post that market tend to create a rejection perspective. Rejection perspective कितना आया था मूवमेंट में, जितना हमारा प्रीवियस अलोकेशन पॉइंट है उतने का ये रिजेक्शन 150% के साथ डबलिंग द क्वांटिटी, मार्केट 150% से रिजेक्शन लिया। पोस्ट रिजेक्शन व्हाट इज द कंटिन्यूटी दैट यू विल बी लुकिंग ओवर हियर? The continuity that you will be looking over here is in the scenarios of 2 point of action. एक first this entire moment, scenario 1, scenario 2 this point of action, right? Let's map both of them, right? So post mapping this point 1, what did market tend to do? Market took a rejection and continue, बिना रिजेक्शन के मूवमेंट दिया है 200% मार्किंग, जो हमारा प्रीवियस मूवमेंट अलोकेशन पॉइंट है उसका ब्रेक करके सस्टेन हुआ है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन नहीं आती है इस कैंडल में, वी विल मल्टीप्लाई इट फॉर 150% रिजेक्शन पॉइंट, ओके? तो इसके साथ गोल्ड का 1 आवर कंप्लीट हुआ है। कम डाउन टू 15 मिनट्स। In 15 minutes, what do we notice? From where we are having a retracement point of action, the retracement point of actions is taken under the considerations of two process again. First, let's map the supply and demand. Post mapping that, we will allocate the numbers. This is my last supply of today, जहाँ से हमने stream close किया था mark करने के बाद, उसके साथ continuity में break हुआ था with small retracement allocations, right? Exact 2 point of actions में rejection लेके market had given a retracement, जितना retracement यहाँ पे build out हुई थी उतना ही movement action plan में यहाँ पे rejection लिया था। उसके साथ continuity, what are the next steps that we'll be looking over here? The second scenario will be multiplying the same action point from this point of action to allocating the next. With this, multiplying the version into 2, allocating towards the next point of actions. With the next point of actions, market gave the movement and the closure continuity. What we'll be doing, we'll be taking the entire moment of the supply. With the supply, multiply the version. With the multiplied version, allocate the points. Point 1, point 2. What do we notice? We notice a break at the exact point of actions and rejection from the same perspectives. At this scenario, what are the steps that we'll be following? Step 1, यहाँ पे S2 B1 भी बना है, B2 भी बना है. Only one thing we want at this current stage is high increase in the volume at 1 hour. अगर यहाँ पे हमें वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखी, then we will be having a reversal at a very good cost till the point of action of your previous demand. So in this scenario, अगर continuity में break आता है,
So demand कितना allocate होगा, जितना 1 hour का previous demand है, that will act as your first. Okay. The scenario is only one thing, volume बढ़ना चाहिए. अगर volume नहीं बढ़ता है, we are not interested again. Continuity with the MTSL will go on. Okay. Is point of action के साथ what are the next steps that we'll be looking? Mathematical numbers. Your swing low will be acting as 3021.737. Your swing high will be acting as at the current stage of 3038.634, and your swing low will act as our morning rejection point, which is 3026.703. At this current range, this is my so this is my 1.618 and this is my 2, right? Any doubts? Do you guys have in gold? Good evening, Patel. Good evening. No doubts. Okay, we'll move to the next BTC. No doubts, no doubts. Sir, ಸ್ವಲ್ಪ voice volume ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. Sir, you should do it actually. ನಮ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Okay. Post this, let's come down to BTC. What a rejection, huh? Starting with BTC. Mark out the POI range. With the POI range allocation points, what are the next steps that you will be looking? Identify the inducement area. Inducement area is identified at this current. ये क्या करते रहते हैं? Okay.
With the inducement range, mark out the entire POI range, double it. Post inducement, the break candle will be getting allocated as the point of actions of the buyer's allocation. With the buyer's allocation, we identify the next movement, which is called as internal liquidity point. At this state of action, this is our internal liquidity, which will be taken under the considerations on the marking. उसके साथ जो डिमांड हमें allocate हुआ है उसी डिमांड के साथ कंटिन्यूटी में ब्रेक कितना मूवमेंट यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखी हमें जितना हमें प्रीवियसली S2 B1 के साथ जो रिजेक्शन दिखा उसी के साथ मैथमेटिकल नंबर्स अलोकेशन होंगे यहाँ पे पोस्ट अलोकेशन पॉइंट व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स हमको फॉलो करके चलना चाहिए फर्स्ट अलोकेट द सप्लाई रेंज विल एक्ट इन द सेम सिनेरियो रिजेक्शन कितना लिया जो प्रीवियस रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ द ग्रीन कैंडल विल एक्ट एज योर करंट रेड कैंडल तो उसे मार्क करेंगे उसके साथ कंटिन्यूटी में जितना भी हमारा सप्लाई एक्शन बिल्ड हुआ है उसी को मल्टीप्लाई करके allocate करेंगे where do we notice the rejection exactly taking from the same point of actions right post the same point of actions what are the next steps that we'll be looking at the current stage of actions we'll be doing the 4 hours analysis 4 hours analysis के हिसाब से what are the major things that we will be allocating at the first stage it is BTC market volatile रहता है so mathematical numbers is the first stage swing high, swing low, and the retracement point remains the same with this continuity of the movement. Though at the current scenario, my swing high is at 82 to swing high is at 82 241, swing low is at 76 681.05, and my retracement point is currently at 79.39.7. What is the formulative number that I'm getting? The formulative number that I'm getting is 5560.47, retracement point 79039.7, direction bullish plus 5560.47, formulative number into 2, which is at the current state of actions, which will be taking under the consideration of 90160.64. Right, this is the current range that will be working at the current scenarios 90160.64. उसके हिसाब से let's start allocating the numbers to the maths हो गया उसके बाद डिमांड जितना हमारा प्रीवियस डिमांड यहाँ पे allocate हुआ था उसके साथ कंटिन्यूटी में रिट्रेसमेंट के साथ ब्रेक उसके बाद this was one of the mathematical numbers mark out the mathematical numbers with the mathematical numbers the continuity कितना सप्लाई यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखी है हमको जितना हमारा प्रीवियस पॉइंट ऑफ एक्शन में मूवमेंट है उतना ही मूवमेंट प्लान ऑफ एक्शन के साथ कंटिन्यूटी में यहाँ पे हमको बिल्ड आउट दिखी multiply the version allocate it with the mathematical number and we do have a rejection at the same point right? Suppose that point of actions, what are the next steps that I will be looking at? Scenario 1, I'll take only the first demand. With the first demand, multiply the version and 200% rejection. Second point of action, scenario 2, what I'll be doing is in the current state of action is taking the entire demand to mark. This is the entire demand what I'm having at the current state. So I'll be taking that entire demand at the point of actions and allocating the movement at the full range. Full range allocation देखेंगे तो exact rejection from the same perspectives and the continuity. Plan of action number 1 जो हमारा first supply point of action है उतना ही moment of allocation हमको दिखने को मिला था at the current state. With this point of action rejection कितना मिला था जितना हमारा previous retracement यहाँ पे supply में create हुई थी उतना ही हमें first retracement में दिखने को मिला था in the continuity. With that जो last retracement point है that will act as our current retracement point with that continue. मार्केट में जितना प्रीवियस सप्लाई बिल्ड आउट हुआ है उतना ही प्रीवियस सप्लाई अलोकेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे allocated post the retracement point there is a break and continue we will do the multiplication into 2 exact rejection is being preferred onto the same spot right what are the next steps that I'll be looking at the current stage rejection कितना लिया मार्केट में scenario 2 कितना हमारा मूवमेंट रेंज ऑफ एक्शन है उसको अलोकेट करो उसके साथ मल्टीप्लाई इट दैट विल बी योर फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट right do we have a retracement yes we do have a retracement so post marking of this what are the next steps that we'll be looking
while the market is in the POI range, what are the major steps that I'll be working over here? Allocating the movements to the previous. How do you look into the circumstances of the marking? Marking यहाँ पे allocation जितना हमारा point of interest में build out होते हुए दिखती है उतना ही moment of action आपको दिखने को मिलेगी, right? So this is my supply. With this supply point of actions, what are the movements that I'm currently looking at the scenario? जितना मेरा demand action यहाँ पे build out में दिखी है उतना ही rejection में market ने continuity में दिखाई दी थी, right? This was my entire demand. With this demand plan of action, this is the continuity of the rejection, right? उस continuity of the rejection के साथ market ने कितना moment ऊपर के लिए गया था जितना हमारा previous supply यहाँ पे acted है, that will act as our current. The current marking will be taken under the consideration of 150%. With 150% of allocations, what are the next steps that we'll be looking? We'll be coming down to 4 or say 1 hour and do the markings. In 1 hour markings, what are the major steps that you will be following at the current stage? ये मेरा previous demand है. Previous demand के साथ कितना rejection लिया market में, उसे हिसाब से allocation के साथ बने रहेंगे. With this is my last retracement candle. I will allocate that point of action into the current. उसके साथ rejection and continuity. Right? ये मेरा rejection है. उसके साथ multiply version, allocate the point. Market ने continuity में break किया था, so double it for the rejections. Post doubling, what are the next steps that I'll be following at the current stage? जितना मेरा previous demand action planned है, that will act as my current. राइट रिट्रेसमेंट कितना लिया था मार्केट में जितना मेरा प्रीवियस रिट्रेसमेंट है उतने का ही रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा राइट पोस्ट दैट व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट मार्केट टेंड टू डू अगेन the previous retracement over here will take as the entire conditions to mark the current build out with the build out continuity में कितना movement generate हुआ जितना हमारा previous allocation point है उतना ही movement यहाँ पे generate होते हुए rejection जो हमारा previous है उसके साथ on to the continuity double it, post the retracement allocated. Post allocation of retracement, double it, continue में allocations, उस allocation के साथ what do we notice? 150% rejection. With 150% rejection, market में कितना dip यहाँ पे दिखने को मिली थी हमें जितना हमारा previous allocation point है उतना ही dip range allocation में दिखने को मिला था to the point of action number 1 with the point of action number 2. Right? So post marking of that, यहाँ पे जो retracement है, how do you look into the structure? जो हमारा inducement range है, that will be acting at the current stage as the current supply with that point of action. जितना हमारा demand यहाँ पे generate हुआ था, उतना ही demand का allocation point हमें फिर से दिखने को मिलेगा. Right? With this point of action, जो movement यहाँ पे है, allocate हुई थी, with that जितना भी हमारा previous retracement है उसका 200% was the next rejection because it's a POI range. Right, post POI range movements, what are the next steps market tend to do? Market created a small inducement over here with the inducement break and continuity. Two scenarios to be taken under the consideration. First, marking of the previous demand to the current. उसके साथ 200% rejection and the continuations to the movement. Rejection mila hai? Yes, definitely rejection mila hai. What are the next steps that we'll be looking? We have a pressure. No, we don't have a pressure. It was just an inducement range breakout. What are the next steps that we'll be looking at the current stage? Post the retracement, whatever the inducement movement is generated, that will act as our current. In this scenario, this is the inducement range. So this will be acting as our current range of actions. Post current range of actions, market continued 200% allocated and the break. राइट उसके साथ कितना मूवमेंट यहाँ पे लॉन्ग की तरफ जनरेट होते हुए दिखी थी जितना हमारा 4 आवर्स का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही मूवमेंट एक्शन प्लान में जनरेट होते हुए दिखा था उसके साथ कंटिन्यूटी राइट पोस्ट दैट मार्केट कंटिन्यूड द ब्रेक अलोकेशंस सिनेरियो 1 150% रिजेक्शन यहाँ पे फिर से दिखने को मिला था राइट पोस्ट दिस प्लान ऑफ एक्शंस व्हाट आर द मेजर स्टेप्स दैट विल बी लुकिंग एट एक सेकेंड ना
ओके 150% से रिजेक्शन लेते हुए दिखी थी, उसके साथ कंटिन्यूटी कितना रिट्रेस हुआ मार्केट में, जितना हमारा प्रीवियस रेड कैंडल था उतना ही रिट्रेस होके मार्केट ने कंटिन्यूटी में ब्रेक आया है। उसके ब्रेक के साथ पीओआई रेंज के साथ नो वॉल्यूम इंडिकेशंस, रिटेलर्स ट्रैप, सर्कुलेटिंग सप्लाई बिल्ड हुई है। डेफिनेटली 7 o'clock को यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट होते हुए दिखेगी हमें। Right, what are the next steps that we'll be following at the current scenarios? The next step we'll be following is in 15 minutes. In 15 minutes, what do we notice? What has the market done in the previous 4 hours? In the previous 4 hours, market had created an proper circulating supply 1, proper circulating supply 2. With this plan of action, market ने क्या liquidity hunt हुआ है? Definitely liquidity hunt हुआ है. उसके साथ what are the next plan of actions that we'll be taking under the consideration at the current point? जितना हमारा each and every movement allocation है उसे map होगा, उसी mapping के साथ continuity में break दिखने को मिलेगी. So this was my previous to the current के साथ movement continue हुई है, movement continuity के साथ double it 150% rejection. Okay. 150% rejection लिया है. Post that, what are the steps that we'll be following? 200% coverage. On the break of this, we will be taking the consideration of the previous demand and allocate it at the current stage. Only on the break. Okay? Don't hurry it and allocate it. गलती में फंस जाओगे, उसके बाद रोते रहोगे. ओके उसके साथ 15 मिनट्स में एक मूवमेंट अलोकेशन हमको यहाँ पे दिखने को मिली थी. हाउ डिड द प्लान ऑफ एक्शन गेट क्रिएटेड, ये कल के दिन में हमने कैप्चर किया था. उसके साथ देयर वाज अ ब्रेक एंड कंटिन्यूटी. कौन सा सेटअप के साथ? S2B1 सेटअप के साथ मूवमेंट जनरेट होते हुए दिखी थी. उसके साथ प्लांट ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ पे बिल्ड आउट में दिखा था हमें. सर्कुलेटिंग सप्लाई 1, विद द सर्कुलेटिंग सप्लाई देयर वाज अ ब्रेक एंड कंटिन्यूटी. फिर से सर्कुलेटिंग सप्लाई बिल्ड हुआ, उसी सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ मार्केट अभी हंट करने आ रही है. राइट, पोस्ट दैट मॉर्निंग सेशन में जो हंट होना था वो हो चुका है. कल नाइट न्यूयॉर्क पीएम सेशन में जो सर्कुलेटिंग सप्लाईज बिल्ड हुई थी, अगर वो हंट अभी होती है, देन द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शंस विल बी टेकन अंडर द कंसिडरेशंस. ओके, ओनली सिनेरियो ये ब्रेक होने के बाद ही नेक्स्ट, वरना नहीं. यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप क्रिएट हो चुकी है, अगर आप ध्यान से नोटिस कर रहे हो तो. मैथमेटिकल नंबर्स चाहिए, आई एम प्लेसिंग इट ऑन द स्क्रीन, अलोकेट इट. Okay, these are the plan of actions which we'll be taking under the considerations at the current state. Any doubts, guys? Hello, sir. Good evening. Good evening, Patel. Good evening, Samath. Yes, please go ahead, Imran. क्या डाउट है तुम्हारा कल का? 10:30 इवनिंग सेशन ना.
10:30 to 2:30. Okay. 10:30. Okay. To 2:30. Can you explain the price action on BTC yesterday? 15 minutes start, 10:30 to 2:30. I am confused in this price action about inducement and trade entry. Why there was a trade entry? Yesterday we had given the mark. No, Mahesh has given the number to us. We had given the marking. That number was only the exact point of interest. And if you want to notice, what did the market tend to do after this entire big movement? Definitely all the retailers will be in FOMO. It just was playing around in the zone to hunt it out. This was just a hunt of retailers, right? With perspective of that, if you notice each and every point of action, selling pressure, 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 selling pressure. With this point of actions, what are the next step? Volume. What did market tend to do at this point of action? Entire movement. Did we had a volume? No. Wick creation is towards the bottom, right? So here the iceberg orders were getting placed. With the iceberg orders, there were inside liquidity which got placed. So inside liquidity के हिसाब से भी दिखाओ तुम्हें till where did the market took the rejection and why? Excuse me guys. हर एक selling pressure के बाद there was a movement allocation, right? Point 1, point 2, point 3, point 4 and point 5. Let's map it. Body 1, body 1, body 2, body 3, body 4, body 5, body 6. Okay. So let's allocate the inside liquidity. Point 1, point 2, point 3, point 4. What did market tend to do? Same prospections, right? So that's how we look into the perspectives of the market. Definitely, I have not taught you guys this. Definitely, I will help you out in understanding the markets even more better and easier. Okay. So that is the perceptions of the movement. Always remember, wick जिस तरफ build होता है उसी तरफ का movement generate होगा. Okay, Imran. What is the premium you used in the Indian session which you said move from 5 to 50? क्यों चाहिए? 51,600. P.
हाँ अंकित पूछो। आप मेरा स्ट्रीम 2 वीक से देख रहे हो, बोल रहे हो अभी भी टाइम फ्रेम पे आपको डाउट है, तो बताओ क्या है। सर मैंने तो राह देख रहा, मैंने तो मैं तो राह देख का मैंने तो राह देखता रह गया लेकिन साइडवेज हो गई एक्सपायरी। ओके, एक ग्लिम्स देता हूँ, ठीक है, जो सैटरडे की वीडियो आने वाली है। ओके, उस वीडियो का एक पार्ट है, राइट, जो कि मैं तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ। सिर्फ सुनना। सिर्फ सुनना है, ओके। डिस्क्लेमर ऑन हुआ है क्योंकि वीडियो चल जाएगा तो यूज ही नहीं होगा ना डालने का। अंकित 2 मिनट दे दो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपका इसमें। गिव मी 2 मिनट्स। पटेल, बेसिकली ये तुम्हारे लिए है, ओके। स्मॉल ग्लिम्स ऑफ today's moment which you guys will get on Sunday. So option price हमने select किया था at the money, which is 51,600. Let me showcase you. 5 rupees का premium 38 चल रहा है at the current state. Can be 2 मिनट 8x running at the current state. आज पुनः प्रॉफिट चल रही है with the small analysis, with the right predictions. Right, selling pressure दिखा था हमें at the first itself. किस पॉइंट ऑफ एक्शन में हमें सेलिंग प्रेशर दिखा था, यहाँ पे। ओके गाइस, टोटल मूवमेंट वो 10x की थी, तो वो भी सुन लो 10x है करके। 9x 44 mediums, 10x running। ओके, लाइव मार्केट में साइडवेज आइडेंटिफिकेशन, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, सब है उसमें।
या अंकित का क्या डाउट था? सर, आई वाज वाचिंग योर प्लेलिस्ट वीडियो in which after target hitting you were saying that our 5 minute trade off action is over now. We have to switch in different time frames. So how will we decide in which time frame our trade off action is happening? Always the trade off actions will happen in 15 minutes, 1 hour, swing trading 4 hours, and daily. Always. नहीं नहीं स्मिता मैम, मैं बोलने ही वाला नहीं हूँ। ठीक है, पसंद आया वो लोग करेंगे, सिंपल है। भीख नहीं मांगना मेरे को किसी भी चीज को। कोई भी डाउट्स है, प्लीज डू आस्क ऑल द न्यू मेंबर्स। Whatever doubts you guys are having in related to trading, please let me know so that I can explain you out on regards to the same. एंड जितने भी नए लोग हैं, प्लीज ट्रेड्स मत पूछो यहाँ पे। राइट, 2 years ऑफ बैक टेस्टिंग होना है जो भी इसमें कर रहे हो उसमें। उसके साथ द नेक्स्ट स्टेप दैट यू गाइस विल बी फॉलोइंग इज 1.5 years ऑफ रिले बार टेस्टिंग. With the relay bar testing, you will be doing 1 month of live analysis. With the live analysis, we'll be doing a small trade execution. With the small trade execution, we'll be working on to the next plan of actions, जो कि रियल अकाउंट के साथ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे. सर, डू यू हैव एनी डिस्कॉर्ड चैनल्स? नो. No FOMO trainings, no FOMO tradings, no running candle executions. Only on the setup of S2 S1 trades will be executed, following the mathematical numbers and allocations towards the pressures of buying and selling. इतना फॉलो कर लो गाइस, आप लोगों को कोर्सेस की कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही चाहिए आप लोगों को. अंकित, कोई भी डाउट है पूछ लेना. डाउट्स हजार है, पूछो, मैं बताऊंगा, प्रॉब्लम नहीं. अनवांटेड चीजें छोड़ के कुछ भी पूछो मार्केट के रिलेटेड, एनीथिंग, आई विल हेल्प यू आउट. बट अनवांटेड चीजें मत पूछना प्लीज. गुड इवनिंग हंस जी.
बीटीसी में करंट S2B2 क्रिएट हो रहा है? नहीं सर जी, अभी तक नहीं हो रहा है। जस्ट एक्सप्लेन किया था ना क्या होने वाला है वहां पे करके। अगेंस्ट क्यों जा रहे हो मार्केट का हंस जी? वाई आर यू गोइंग अगेंस्ट द मार्केट? प्लीज डोंट गो अगेंस्ट द मार्केट। ओके, सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी तक पूरी तरीके से हंट नहीं हुई है। प्लीज डोंट लुक इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। हंट होने दो, उसके बाद देखो। हंट होने से पहले नहीं। अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। स्मिता मैम आपको नहीं बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो। आपको हरगिज नहीं बोलूंगा। गुड इवनिंग अंबिका। एमटीएसएल लगाओ, सुबह में तो एमटीएसएल नहीं लगाए थे, अब तो लगा लो। 300 पिप्स के साथ चल रही है मूवमेंट। गुड इवनिंग हर्षित। गुड इवनिंग हर्षिता। गुड इवनिंग विश्वनाथ सर, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाउ वाज योर ट्रिप? गुड गुड। सर इसे भी भेजो सर, आपके बेटी को भी। इधर आके मेरी सर खाती रहती है। हाँ, फनी वे में बोला हो सर, सीरियसली मत ले लेना। हाँ सर, डेफिनेटली विल डू इट। कब से शुरू कर रहे हो? डन है, विल डू इट, नो डाउट। जीडीपी अपडेट्स फॉलो करते हो? नहीं, मैं सिर्फ मैथ्स फॉलो करता हूँ। 1 + 1 2, 1 - 1 0। जितने भी लोग स्ट्रीम देख रहे हो, पुराने लोग, प्लीज डू द बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग एंड लाइव टेस्टिंग। अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ऑल्ट ए करके दबाओ, अलर्ट आ जाएगा। जिस प्राइस एक्शन में आपको दबाना है, उस प्राइस एक्शन पे नंबर डाल के रख दो, जैसे वो टैप होगा पता चल जाएगा। तब तक बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। टाइम इज मनी। डोंट वेस्ट द टाइम आस्किंग फॉर ट्रेड्स। लर्न। कितने मिनट की वीडियो है? 10 मिनट की वीडियो है मैम, साइडवेज के ऊपर। हाँ, बैक टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। मैं सोचा आज के दिन भी नहीं आएगा, बट आज आ गया था। नीलेश, यू अंडरस्टूड? साइडवेज में नीचे भी विक क्रिएट होता है, ऊपर भी विक क्रिएट होता है। ओके, इंडिसेस जो कैंडल्स क्रिएट होती है। एग्जाम्पल बैंक निफ्टी।
Samarth, how is your back testing, forward testing going on? विनोद जी लाइव स्ट्रीमिंग पे हो क्या? हाँ, निफ्टी ने नहीं दिया मूवमेंट। Currently good. Currently testing BTC on 1 hour. Okay. अगर स्ट्रीम पे हो तो मैं आपको एक मैसेज भेजा हूँ टेलीग्राम पे, लाइव स्ट्रीम बंद कर दीजिए आप, वो जो मैं मैसेज भेजा वो कीजिए, ठीक है? Yes, thank you so much. One out of the box question. Please don't ask only, Anjali. Please don't ask. Hugh, this is for you. Allocate it in swing. Okay? डेली का 37% डिप्लॉय करना. सेम विथ XRP. Sumit, how is your back testing going on? Forward testing कैसे चल रही है?
Sir, I just got a link through one of the friends. There is an analysis in trading on a name of Katappa. Trying to catch up, not at the fast speed as of now, but will gain in next 10 days. Keep going. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कटप्पा कर दिया और उन बोल बोल के थक गया हो सच में बोल रहा हूँ ब्लॉक कर दूंगा यूट्यूब में एमटीएसएल लेके चलो सब लोग अरुंधति मैम यू ब्यूटीफुल गाइस 1000 पॉइंट्स रनिंग यू वोंट डू इट देखता है ऐसे ही परेशान करते रहे डेफिनेटली कर दूंगा प्रूफ चाहिए 5 मिनट के लिए ब्लॉक कर दूंगा तेरे नहीं नहीं सर ब्लॉक मत करो एलटीडी में आके परेशान करेगा नहीं इधर आके करने दो इधर प्रॉब्लम नहीं यूट्यूब पे नहीं हो Is it the morning trade running? Yes, morning trade was also running. Evening session में भी setup बना था ना? इमरान इतना बड़ा हिंट डाल के रखा मैंने कोई बात नहीं है S2B1 सेटअप क्रिएट होगा उसके साथ बने रहना ठीक है एंड गोल्ड पे भी मत बोलना कि ये तुम्हें दिखा ही नहीं जो एनालिसिस के टाइम जब ये रेड कैंडल बन रहा था जब हमने डाला था आरबी को पूछ रहे हो मिस्ड दैट वन
ओके, नो वरीज। कोई बात नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है न्यूयॉर्क। मजेदार। सर नेक्स्ट टाइम बनने से पहले मत डालो सर। आ, क्या जाता है बनने से पहले डालूंगा तो। हम्म, तो क्या कहेंगे, कहने दो। अगर मैं 1 महीने से तुक्का लगा रहा हूँ तो सोच लो कितना बड़ा तुक्केबाज होगा मैं। कितना बड़ा तुक्केबाजी होगा मैं, होऊंगा मैं। यस। हु सेड दिस? तुम्हारा फेवरेट, तुम्हारे टाइम से जो है वो। कुछ तो मिस हो रहा है ना यहाँ पे। Oh my God, what a surprise. Miss Elizabeth, how are you? Long time. ऐसे surprises मत दिया करो आप। So there is a story of this lady, okay? She is one of the ex-employees of one of the biggest investment companies in India. Currently retired, enjoying the life, having fun. And she is none other than Elizabeth. Hello. सीखने के लिए नहीं है, just to say hi, she has come, that's it. Her way of trading is entirely different.
Yo, yo, why are you mixing Hindi with English? Got adopted to it, so couldn't do anything more than that. So, yeah, working on the functionality. Are you coming to Forbes BLK Summit? Yes, ma'am, I'm coming there. Which company are you picking up? Not yet decided. Yeah, I'll look into it, right? So if I get a really good AI startups, then I'll look into the perspectives of. Yeah, I've got some recommendations for two, three companies. Could work on that and could get sustained onto the same. Definitely, for sure. Atlanta, right? This time. Cool. So I'll get in touch with you on a call, right? So maybe like this Saturday or something. Okay. Take care. Bye bye. कोई भी डाउट है पूछो. All the new members, any doubts you guys are having, please do ask. डाउट्स पूछने से छोटे नहीं हो जाओगे या आपकी कुछ हैसियत कम नहीं हो जाएगी. पूछने से सीखोगे, बढ़ोगे.
Beautiful, guys. Almost goal target hit. Three more points, 400 pips. 3044 running. Beautiful. IG में हिट हो गया तो यहाँ पे भी हो जाएगा. Beautiful. TP1 hit, guys. 110 pips running. Keep up the good work. Ninety pips running, 1200 points running in BTC. Good job. BTC TP1 हिट होने के लिए 300 points more needed. Beautiful. 86 560. TP1 of mathematical number. This is the TP1 86428. सबका MTSL 50 pips पे लेके चलो. ये भरत का ट्रेड था ना, ये सुबह वाला. What a rejection. 150%. Inside candle. S2 B2 setup के साथ long भी हुआ. Lucky guy. गोल्ड वाला शॉर्ट ऑर्डर S2 B2 था. यस सर. एक कैंडल में एग्जीक्यूट हुए थे. आप अगर S2 B1 के साथ भी एग्जीक्यूट करते तो टारगेट हिट होता. 1 2 यहाँ पे भी एग्जीक्यूट कर लेते तो टारगेट हिट हो जाता.
ब्यूटीफुल गाइस। MTSL फॉलो करो। How do we book profits like in gold hits TP1, but there is a probability that it might continue falling? So do we close half quantity or do we wait for MTSL with full quantity? What is the proper way? TP1 उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है on the basis कि like where will my MTSL gets into the play, right? If there is no big volume change, we will trail it and MTSL will be followed, right? If there is a very big volume spike into the structure of the TP, then we will exit 75% of the quantity, sometimes 80, and let remaining 20 run, right? That 20% will get hit at the MTSL point. Right? So if not that, the next scenario is let the market generate S2 or S1 scenarios. Once we come to know there is a S1 and S2 scenario generated, then exit. सर ट्रेडिंग व्यू से पहले तुम्हें प्राइस कैसे पता चल रहा है? Beautiful guys. Lovely. Beautiful guys. TP2 hit. MTSL's at 120%. Sorry, 120 pips. BTC में एक छोटा सा ट्रैप देखने को मिलेगा at the current state. With the trap continuity. ट्रेडिंग व्यू एंड IG मार्केट प्राइस डिफरेंस होता है. Imran, I am still seeing you, right?
आईजी में दो कैटेगरी है। आप लोग बात कर रहे हो आईजी मार्केट, जो कि सिस्टर कंपनी है ऑफ आईजी ग्रुप्स। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट आईजी ग्रुप्स। ब्यूटीफुल। ट्रेडिंग में 2 मिनट के बाद हिट हो रहा है टारगेट। ओके, बीटीसी टारगेट हिट गाइस, टीपी1 ब्यूटीफुली हिट, लवली। ये हमारा मैथमेटिकल नंबर था, उसी हिसाब से टारगेट हिट हो चुकी है ऑफ गोल्डन रेशियो 86428.02, 86414.65 तक आके रिजेक्शन ले रहा है। लवली, राइट। इमरान, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस आईजी के बारे में बात कर रहा हूँ। वर्षा, पागल हो गई हो? क्या दिखाना दिखाना क्या चाह रही हो तुम? मत करो। लवली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, दी आईजी ग्रुप। ओके, एंड उनका होम पेज देख लेना, उनका क्लाइंट बेस देख लेना, एंड उनका टर्नओवर देख लेना। गुड इवनिंग विनोद जी, आपको एक वीडियो भेज, सॉरी, आपको एक मैसेज भेजा है ट्रेडिंग व्यू में, सॉरी टेलीग्राम पे। वो फॉलो करना, लाइव स्ट्रीम पे मत रहना। डोंट बी इन द लाइव स्ट्रीम। ओके, नहीं नहीं विनोद, विनोद जी, आपको टेलीग्राम पे एक मैसेज भेजा है, प्लीज फॉलो दैट मैसेज, डोंट बी इन द लाइव at the current state, please. Request. 200 more points for intermediate ratio target to hit. Follow through movements. 86,083 is our next target.
Sir, S1 and S2 are inducement, but what is B1 and B2? अंकित, अगर आप इंड्यूसमेंट के वीडियो पूरी तरीके से देखे हो, S1 के अंदर B1 B2 B3 आती है, S2 के अंदर B1 B2 आता है, right? So you will understand what it is exactly. Okay, Ankit? Okay, Ankit, hope you got the point. सर, ऐसे मत करो लाइव में, ऐसा कोई नहीं कर पाता है ट्रेडिंग में। मैं क्या करूं? कोई नहीं कर पाता है तो उनका गलती है ना। ईएमए के थ्रू ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो। Yes, bullish and bearish conditions. सर, कल इवनिंग में आपने मिरर यूज करके दिखाया था when you explain how to use it when we flip it. I am talking about the bear pattern indicator. अंकित, इतने जगह से आप जो जो सीख रहे हो ना, कुछ फायदा नहीं है, बता रहा हूँ। Stick to one strategy, and second strategy that will be your backup, right? आईसीटी कर रहे हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कर रहे हो, राइट? क्या क्या करोगे? कोई भी चीज को आपने 2 साल के ऊपर बैक टेस्ट किया है? उसके साथ 1.5 इयर्स को फॉरवर्ड टेस्ट रिले बार में किया है? लाइव ट्रेड एग्जीक्यूशंस में एनालिसिस की है? आपको इतना सारा पैटर्न जान के करना क्या है? सर, व्हाट इज डिम जोन? मतलब समझा नहीं अंकित। वो टीआईएम जोन होगा, वो काम करना बंद कर दिया। दैट इज सीजनल, दैट कम फॉर ओनली 3 months। I think you're talking about TIM zones. That comes only for 3 months.
हुई। वर्षा, सॉरी, वर्षा, हाँ, अभिषेक को बोलो इसके ऊपर काम करना है। सॉरी गाइस, सॉरी, था नहीं। सर, कैन यू एक्सप्लेन CS एंड डिम जोन? डिम जोन क्या होता है, मेरे को बताओ तो सही अंकित। 1600 पॉइंट्स रनिंग। सर, BTC में आज ऑर्डर किस सेटअप से लिया है? S2B1 सेटअप, उसी पॉइंट ऑफ एक्शन। गाइस, TP2B हिट BTC में, वंडरफुली डन। Perfect rejection at 150%, 86,083, done and dusted. Done and dusted ऐसे बोलते हो जैसे कुछ हुआ है। Done and dusted. Wonderful guys. अंश जी, फर्स्ट सेटअप ये वाला जोन था। इसी पॉइंट ऑफ एक्शन में एक सर्कल ड्रॉ करके बोला था कि यहाँ पे एक सेटअप बिल्ड हो रही है। सेकेंड सेटअप ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पे थी हमारी सुबह वाली। एंड वैसे भी कल का ट्रेड अभी भी चल ही रहा है, तो यस।
अगर ये 50% ऑफ द अलोकेशंस ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट डायरेक्टली आके 3017 का है। ठीक है, sir, if there is 2 or 3 swings which be taken from the mathematical calculations, you said screening is important for that. Can you explain? Sir, TIM zone clear. TIM zone is a very vast moment. वंश बताएगा TIM zone क्या है तुम्हें. Right? He has worked in TIM zones. Good evening, वंश. अंकित को TIM zones के बारे में बताओ. 1 hour gold volume raising breakout. कहाँ पे? 1 hour में वॉल्यूम रेज. अभी 20 मिनट्स है कैंडल क्लोज होने में. TP3 हिट गाइस. अभी अच्छा खासा 200 पिप्स में ट्रेल करके बैठो. डायरेक्ट नेक्स्ट टारगेट हिट होगा तो होगा, नहीं होगा तो MTSL 200 पिप्स घर को आएगा. कुछ भी मत बोलो सर. आएगा तो आएगा एग्जाम्स. चलो 3029 भी ब्रेक हो चुका है. सर BTC नेक्स्ट टारगेट मार्क हो है ना ऑलरेडी. ये वाला नेक्स्ट वो होने के बाद देखते हैं कौन सा लेना है. 1 hour में आओ. ये हो गया, ये भी हो गया, टारगेट हिट हो गया. What is the next point of actions that we are having at the current stage? The next point of action is this will be your swing high, this will be your swing low, this will be your retracement. Okay. Lovely. Entire circulating supply is pending in daily time frame. Huh? सर वो कॉलेज में एग्जाम्स में मार्क शोइंग वगैरह की वजह से थोड़ा हेक्टिक. नो वरीज वंश, टेक केयर. आराम से. पास तो हो गया ना, उससे ज्यादा मेरे को फर्क नहीं पड़ता है. एंड और एक बंदा है तुम्हारे कॉलेज से 94% लाके परेशान है बंदा. भाई साहब, क्या करते हो उतने मार्क्स का ये मेरे को नहीं पता है. एट लास्ट वो अटकने वाली है किसी एक दीवार में. एज आई अंडरस्टैंड दैट imbalance HVG formed near support and resistance. Okay.
ये मार्केट फॉल क्यों हो रहा है? जीडीपी का अपडेट आया है ना? यस सर, पास तो हो गया। नाइस। गुड लक, ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस, जो भी उसे कहता है। कंग्रेचुलेशन, सॉरी। Circulating supply is characterized by low volume, right? And is that always hunted down? Yes, Sumit, always. BTC का दिखाता रुको. Every day the same explanation, na? Right? What did we say when the screening was happening, when the market was here? There is one circulating supply, right? Market hunted them out. Post the movement, there was one more over here. Market नीचे आया क्यों first place पे? Right? There was one more over here. There was one more over here. On the coverance of this indicated I started with this indication to cover up this movement had come. Right? With this plan of action, if you notice, there will be one more circulating supply nearby. Where is that circulating supply? This entire movement. ये text क्यों आ गया? There is one more circulating supply. So that will also get haunted. Haunted बोल रहा हूँ, hunted. Sorry. Varsha, one more candle for Abhishek. BTC में एक है आज के दिन में, गोल्ड में 3. उसमें जितना भी भेजा था ना वंश, राइट, सब आधा सही है आधा गलत है. अगर कोई एक टाइम फ्री मिल जाता है ना, I'll sit with you. Okay? इमरान, कौन से ट्रेड में हो? मत बोलो कि एक भी ट्रेड में नहीं हो. गाइस, सबका MTSL 220 पिप्स में होना चाहिए. कुछ भी कर लो, सिस्टम ट्रेलिंग 200 पिप्स. ये टारगेट हिट हो गया है तो मैं हटा रहा हूँ. मैथमेटिकल नंबर का टारगेट हिट हो गया है तो हटा रहा हूँ. सर, यू डोंट इवन सी द प्रीवियस कैंडल्स. जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो देख के क्या करूंगा मैं? हम सोच के ट्रेड करने वालों में से नहीं है. हम मार्केट क्या बताता है वो ट्रेड करने वालों में से. गोल्ड ओनली. ओके, ग्रेट. गुड जॉब. What is the entry point? Hope that is not running candle trade. BTC missed the setup, couldn't understand that setup. No worries.
गोल्ड एग्जीक्यूशन 30,050 30,052 के रेंज में है, वेल एंड गुड. If it's below that, then you have to work again. Okay, Imran? कल फ्राइडे है ना? कल मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, इंडियन सेशन. थर्ड कैंडल फ्रॉम द टॉप रिजेक्शन. ग्रेट. 3052. ब्यूटीफुल. 180 pips running. Great. MTSL फॉलो करो, डरो मत. टारगेट इज स्टिल 3018. 3051 एग्जीक्यूशन. गुड एंट्री. 3051 में एग्जीक्यूशन लिया है. क्या 4 पॉइंट्स का एसएल गया? 51. 51. यार कोई तो एसएल दो यार. अगर यहाँ पे S2B1 या S2B2 क्रिएट होती है इनसाइड कैंडल के साथ, देन ओनली वी विल एग्जिट द ट्रेड, एल्स नो एग्जिट. आप ही दे दो. मैं कोशिश करता हूँ देने की, बट होता नहीं है, क्या करूँ. फैक्ट. अगर ऐसे रिजेक्शंस लेता रहेगा तो मैं कैसे दूंगा, बोलो. भाई साहब. यहाँ पे दो ही चीज हो सकती है. या मैं इतने नशे में रहूं कि मेरे को पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ एसएल देने के लिए. सेकंड चीज, अगर मैं ट्रेडिंग भूल जाऊं उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करूं. ये दो ही सिनारियो होंगे मेरा नेक्स्ट एसएल लेने के लिए. सर वैसे कुछ डाउट्स था, बट आपने कह दिया पहले वाला ही आधा गलत है. पूछो वंश, क्या डाउट्स है? एटलीस्ट ट्रेडिंग रिलेटेड है आपका. पूछो. आई कुड लव टू एक्सप्लेन यू. पूछो. इनडायरेक्टली टॉन्ट मार दिया. और क्या करो स्मिता मैम?
सर 150% रिजेक्शन के बाद इन मोस्ट लाइव सेशंस वी गो डाउन टाइम फ्रेम, but in some of them we take the previous rejection as the retracement point. तो उसमें थोड़ी confusion थी, right? 150% rejection के बाद in most live sessions we go down time frame. हम 15 minutes के नीचे कब गए? Right? Top down analysis में yes, 150% rejection होने के बाद 4 hours में 150% दिखाया है, then we'll come down to 1 hour. 1 hour पे जब दिखाया है 15 मिनट, बिकॉज हमारा ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन 15 मिनट में होता है, करेक्ट? तो डायली टाइम फ्रेम से 150% रिजेक्शन मिल रहा है, दैट्स वेल एंड गुड टिल 15 मिनट्स. 15 मिनट्स में आके जो रिजेक्शन पॉइंट दिखती है जहां से रिवर्सल एग्जीक्यूशन होता है, उसी पॉइंट ऑफ एक्शन से ट्रेड्स अलोकेट होंगे. ठीक है वंश. एंड ऑल्सो इफ बिफोर कंप्लीटिंग द सप्लाई देयर इज अ स्मॉल रिजेक्शन कैंडल, डू वी चेंज द सप्लाई टारगेट्स? नहीं, राइट? एक चीज याद रखना वंश, मैं आप लोगों को बेसिक गोल्डन रेशियो बता रहा हूँ जो कि 1.618 की फॉर्मूला के हिसाब से, ओके? उसके डाइवर्जन में वी हैव 7 गोल्डन रेशियो फॉर्मूलाज व्हिच डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज फॉलो. some follow 1.617, some follow 619, some follow 20, some follow 7.5, some follow 1.6.5. राइट? इन दिस सिनेरियो कभी कभी 2.200 पॉइंट्स अप एंड डाउन में चलता है, दैट्स टोटली फाइन. वी आर टोटली ओके विद इट, ओके? बिकॉज वी हैव नॉट चेंज्ड एनी नंबर. जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का बेसिस पे क्या नंबर निकला है हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट? इन दिस सिनेरियो ये हमारा एग्जैक्ट टारगेट था, करेक्ट? इसके बाद अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हो विद द स्विंग हाई लो एंड रिट्रेसमेंट, दिस इज एग्जैक्टली द रिजेक्शन पॉइंट ऑफ 1.618. उसके साथ ये जो रिजेक्शन क्रिएट हुआ है ना यहाँ पे 1.619 का एक्यूरेसी मींस 1.619 का एब्रिवेशन के साथ मूवमेंट जनरेट हुई है ऊपर के लिए, ओके? सो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना कॉमन है, टेकिंग अंडर द कंसिडरेशन पॉइंट. स्ट्रीम विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 40 मिनट्स, सॉरी 30 मिनट्स. जो भी डाउट है पूछ लेना. ओके वंश. सच में महेश ने सही कहा था. क्या कहा था महेश ने? आपको बोर नहीं होता है रोज पैसे देख के? क्यों, तुम्हें बोर लगने लग गया है क्या? तुम्हें बोर लगने लग गया है क्या?
थोड़ा बहुत। वैसे आज महेश नहीं दिखे। जिस दिन एसएल दोगे उसी दिन लोगों को पता चलेगा कि आप सच में ट्रेड करते हो, उसके साथ आपका सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा। उससे अच्छा है आई एम हैप्पी विद द सब्सक्राइबर्स। एक एसएल देने का चक्कर में मेरे को सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है तो मेरे को बढ़ाना ही नहीं। मिस नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिविटी चलती है, तुम नेगेटिविटी फैला रहे हो। मजाक था सर, चलेगा, छोटा मोटा चलेगा। लॉन्ग में भी बैठ गए क्या? लॉन्ग में बैठने के लिए सेटअप कहाँ पे बना? रिजेक्शन लेगा तो बैठूंगा ना। बिना रिजेक्शन लिए बैठ जाऊंगा क्या? कुछ भी बोलते रहते हो। डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखो इसका जादू। सिर्फ गोल्ड में फोमो हो रहा है। अगर गोल्ड में तुम्हें फोमो हो रहा है तो बीटीसी का चार्ट दिखाऊंगा तो तुम पागल ही हो जाओगे। Look at this. जितना गिरा था उतना रिकवर। एमटीएस से हिट हो गया, वो डिफरेंस सिनेरियो। सिर्फ आज थोड़ा बहुत ही लाइन डाल दी। वो लाइंस नहीं, वो टारगेट्स था। ये टीपी वन थी, ये टीपी टू 150% था। अगर मेरे को ये कैंडल क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल में रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में दिखाती है, देन आई विल लुक फॉर एन एंट्री। ओनली सिनेरियो अंबिका, रिजेक्शन लेना चाहिए, उसके बाद कंटिन्यूटी। अगर रेड कैंडल क्लोज करता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। कितना ट्रेड करेंगे यार? एक, दो, तीन, चार ट्रेड हो चुके हैं सुबह में। ये 500 भी लेने बोल रहे हो? मैं चार में खुश हूँ।
In the current BTC 15-minute chart, which supply we will allocate here? Allocation तो already हो चुकी है, ये previous. वो होने के बाद जो last supply, ये वाला taken under the consideration. VIX से 150% allocation point. Okay. अभी भी शॉर्ट के ट्रेड में हो क्या? यस, MTSL हिट नहीं हुआ मेरा अभी. BTC हो गया, गोल्ड नहीं हुआ. गोल्ड में इतना कॉन्फिडेंस है ना मेरे को कि जब तक वो सेटअप क्रिएट नहीं करता है मैं एग्जिट ही नहीं करता हूँ. BTC इज लाइक माई क्रश, कभी कभी धोखा दे देती है. तो MTSL टाइट रखना पड़ता है यहाँ पे. अगर ये आपको ट्रेंड चेंज करके दिख रहा है, दिस इज नॉट ए ट्रेंड चेंज समर्थ, दिस इज जस्ट अ रिजेक्शन. ट्रेंड चेंज होने के लिए 1 आवर में त्रिशूल चाहिए. क्या हमारे पास त्रिशूल है? त्रिशूल नहीं है, तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे अभी भी. नोटिस कर लो. 1 2. अगर नीचे से त्रिशूल बिल्ड होता है तभी ही ट्रेंड चेंज, उससे पहले नहीं. प्लीज डोंट बी इन द वहम दिस इज अ ट्रेंड चेंज, दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट. क्योंकि हर एक रिटेलर यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ एक्शन में एक लाइन डाल के बैठा है. ओके, तो ये ब्रेक में जितने भी लोग एग्जीक्यूट किए ना उनको बाहर करने आया है. BTC 745 and 8 15 minutes bullish candle. I was looking at it reversal but wasn't a reversal. 7:45 and 8 o'clock. BTC 15 minutes. 7:45, 8 o'clock. इमरान, रिवर्स होने के लिए हमें नीचे के लिए ये पैटर्न चाहिए, ऊपर के लिए ये पैटर्न चाहिए. कहाँ पे बिल्ड हुआ है? 1 आवर में दिखाओ. प्लीज गाइस, trade what you see, not what you think. I'm talking about the current candle. I am not talking about the bearish move of morning. I'm also talking about current candle only, Janab Samar. If you are saying me this is a reversal candle, then you are wrong. For this, you need to have 1 hour threshold generation for the reversal. Do we have it? No, right? Then why are you looking for a reversal at first place?
जनाब मे भी अभी का ही कैंडल का बात कर रहा हूँ. इस कैंडल रिवर्सल कैंड दिस इज नॉट अ रिवर्सल कैंडल एट ऑल. This is not a reversal candle. Who is saying this is a reversal candle? To identify this as a reversal candle in 1 hour, do we have a threshold build? Do we have this pattern in 1 hour? Say me that. One, two, three. Do we have a pattern over here? No, right? So you will not take the consideration of a reversal. 500 पॉइंट की एक कैंडल में अगर आप रिवर्सल बोल रहे हो then you are wrong. This is not a reversal. So gold reversal candle works because 1 hour candle was bearish, right? No. In the gold scenario was totally different, right? If you notice at this point of actions, what do we see? At this current point of action, we had a selling pressure, right? With this selling pressure, the second candle, what did the market tend to do? I will take this candle as the current green candle and I will take this candle as the current red candle. Okay. So this is my red. Okay, this is my green. Okay, what is my level of action? This is my level of action. So what I will be doing? I'll be looking for an allocation point. Okay, post the allocation point, I will mark my wick. Okay, post marking of the wick, what do I notice over here? So the entire moment allocation was in the circumstances of bearish movement, right? So double confirmation. So once that confirmation was there, so we had looked for a short trade of allocations at the current stage. And exactly a mathematical number का rejection था 1.618 का. Right? Post that, what is the current movement? ये ऊपर क्यों जा रहा है? अगर नीलेश का मैसेज पढ़ोगे आप लोग, gold 1 hour volume rising or a breakout, correct? So in this scenario, I have said 20 minutes अभी भी है close होने के लिए. Volume high के साथ what do we notice at the current stage? There is a pressure of the bullish. मतलब buyers यहाँ पे fully interested है, right? इस point of action के साथ movement ऊपर के लिए गया है. But क्या ये directly accumulate करके चलेगा? नहीं. नीचे आएगा, raise action build करेगा बाद में, right? But analysis of Nilesh is perfect. क्या हुआ मार्केट में? 1 hour में जब भी वॉल्यूम स्पाइक आता है, मार्केट रिवर्स होता है. हुआ? बट हमें एंट्री करने के लिए मौका मिला नहीं. So at the current state of actions, the consideration of the current movement is also towards the bullish side because volume pressure reversal हमको 1 hour में दिखने को मिली.
Yes, it did. Good job, Nilesh. Thanks, Aman. Yes, Nilesh was correct. तो उसके साथ जो हमने मैप आउट किया था, क्या वो मैप आउट रिजेक्शन भी उधर ही से निकला? राइट? द सिनेरियो ऑफ सर्कमस्टांसेस हमें हमेशा इंडिकेट करता है कि अगर जनरेशन ऑफ द प्रेशर इज शोन, the execution should be there. But do we have the setup? No. So you should be okay to let go few of the trades. हाँ, अगर डेफिनेटली यहाँ पे रिजेक्शन दिखाएगा, रिजेक्शन के साथ कंटिन्यूटी आएगी, देन आई विल लुक फॉर इट, राइट? नॉट प्रायर टू दैट. ओके, इमरान. अगर मेरे को तुम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने बोल रहे हो, आई विल नॉट टेक इट एट ऑल. मैं बोलूंगा आई विल लीव इट, दैट्स टोटली फाइन. कीपिंग इन माइंड दैट इज द थर्ड कैंडल. बट क्या वो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड में है? आई एम नॉट विलिंग टू गिव my entire one trade profit to the market. So अगर मेरे को यहाँ पे 50 पिप्स का एसएल रेंज भी मिलते हैं, यहाँ पे उस पॉइंट तक भी रिजेक्शन मिलता है, then yes, I will look into the executions. But 120 pips as a SL, no. Right? अगर एसएल रेंज हमारा 40 पिप्स है लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन, एंड यू नो दिस मूवमेंट इज कमिंग, राइट? यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स कितना रिस्क कर सकते हो? 40 पिप्स के ऊपर 10 पिप्स एक्स्ट्रा रिस्क कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. कीप दैट इन माइंड ऑलवेज, राइट? मेरा 4 ट्रेड प्रॉफिट हो गया करके मैं एक ट्रेड लॉस करने में तो नहीं बैठूंगा ना. अगर मैं जिस दिन वो करूंगा, मेरा साइकोलॉजी एकदम हिल जाएगी. जिस जिस भी दिन करूंगा उस दिन मेरा साइकोलॉजी हिल जाएगी, टॉप टू बॉटम. दैट्स द गेम ऑफ द साइकोलॉजी. क्या यहाँ पे आपको फोमो होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पे फोमो किन लोगों को होता है? जो सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं किए उनको पहला, जो मॉर्निंग में वो जो छोड़े उनको, उसके बाद इस पॉइंट ऑफ एक्शन से जो जो लोग छोड़े उनको, उनको फोमो होता है कि रोज मूवमेंट दे रहा है, मैं गलत जगह पे बैठ रहा हूँ, राइट? दैट इज द ओनली प्रॉब्लम व्हाट मेजर ऑफ द पीपल्स आर हैविंग इन द करंट सिचुएशन. क्यों सब लोगों को आदत है 5 मिनट 1 मिनट में ट्रेड करना, गोल्ड और बीटीसी? 5 मिनट 1 मिनट के हिसाब से वो लोगों को चार्ट कैसे दिखता है, एक बार दिखाता हूँ. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ 1 मिनट, राइट? यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन फॉलो करोगे? सेलिंग प्रेशर आया है. सेलिंग प्रेशर आया है, राइट? नो डाउट. जो रिजेक्शन पॉइंट ऑफ एक्शन में है वहां पे कुछ मिला है. उधर भी ना, ये दो कैंडल होते ये रेड कैंडल में आउट हो चुके होंगे लोग, राइट? क्योंकि इतना मोशन ऑफ 5 मिनट्स में उनको दिखाया है ना, रेड 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 कैंडल है,
कंटिन्यूटी में जाएगा मार्केट, ये 0.3% है, एग्जिट कर लो यार। सॉरी सॉरी, माय बैड। 5 मिनट्स में क्यों ट्रेड नहीं करता? 5 मिनट्स में मेरा एक्यूरेसी था 85%। 15 मिनट्स में करेंटली my accuracy is running with 99%. So I'll select 99%, not 85. पूरा दुनिया तो 5 मिनट फॉलो करता है। पूरा दुनिया पागल है करके मैं भी पागल बन जाऊं क्या? उनको वो पसंद है, वो कर रहे हैं। सिंपल, मेरे को ये पसंद है, मैं ये कर रहा हूँ। स्मूफिंग करके एक चीज है, थोड़े लोग करते हैं, राइट? 20 सेकेंड्स की कैंडल्स क्रिएट होते हैं, राइट? उस कैंडल में भी बाय सेल होता है, राइट? दैट एंड ऑल आर precisions of looking into the markets. जिनको जो सेट होता है उसमें करने दो। सिंपल। आप बोल रहे हो कल के दिन भी गोल्ड बुलिश है? यस, कल के दिन भी गोल्ड बुलिश है। अगर न्यूयॉर्क पीएम सेशन 3060 टच हुआ आज, समझ लो कल के दिन पूरा दिन मार्केट बुलिश रहेगा। एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, पूरा दिन मार्केट बुलिश रहेगी। Gold, I was out at 100 pips. No worries, Imran. Good job. 100 pips is good number. स्विंग ट्रेड अभी भी चल रहा है सर, ये अभी भी चल रहा है। जो 3018.500 में लिया है वो ट्रेड भी चल रहा है, 3032 में जो लिया है वो ट्रेड भी अभी भी चल रहा है। जो ट्रेड 3022 पे भी लिया था वो ट्रेड भी अभी भी चल रहा है। The only one thing which I'm regretting is ये यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बिल्ड किया। अगर ये प्राइस एक्शन यहाँ पे बिल्ड करता तो यहाँ पे और एक एड ऑन क्वांटिटी होती। बट that's a part of the game. Sometimes you win, sometimes you lose on add-ons also, right? तो एक add-on मिस हो गया, that's totally fine. बट उसके बदले में हमें अच्छा खासा 250 पॉइंट्स का मुंह मिला, उसमें से MTSL हिट हुआ 180 पिप्स पे। So yes, I am happy with that. So this entire movement is off currently with 150 pips, no? Yes, 160 pips. 160 pips में 180 pips closure मिला है। Yes. So at this point of action, I won't be sad because my time
value was considered and I have taken the execution and the returns is given in the perspective of the same. So I'm happy at the current stage in regards to the previous. So that should be the way of thinking. Okay. अचानक से क्या हो गया अंबिका? नेगेटिव से फुल पॉजिटिविटी में आ गई. वो मजाक कर रही थी. ओके. अगर मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को ड्रॉप देता है 50 पिप्स तक एंड मेरा एसएल रेंज 50 टू 55 पिप्स के अंदर आएगा, मैं फिर से लेने को इंटरेस्टेड हूँ यार. उससे पहले नहीं. इतना बड़ा डिमांड जो डाला है वो तो हुआ है नहीं. रिवाइंड करके देख लो. अगर 50% ब्रेक होके सस्टेन होता है तभी ही टारगेट 3018 तक करके बोला है. बीटीसी में मैं तभी लॉन्ग के लिए इंटरेस्टेड हूँ जब मेरे को यहाँ पे त्रिशूल क्रिएट होते हुए दिखेगी, उससे पहले नहीं. त्रिशूल इन 1 आवर अगर वो बिल्ड होते हुए दिखेगा देन लॉन्ग आई विल लुक फॉर. उससे पहले नहीं. राइट, जैसे मॉर्निंग में बिल्ड हुआ था वैसे अभी बिल्ड होगा, तभी ही जाके मैं लॉन्ग के तरफ देखूंगा. तब तक के लिए नहीं. सर ये तो फोमो है. हो रहा है क्या तुम्हें फोमो? नो वरी संजय. एग्जीक्यूट मत करना. ओके गाइस, trade fearlessly, execute the trades with proper risk management, emotional-less trading. जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not a quality of the traders. Be in the directions of the market, follow the mathematical rules, and don't lose the confidence and the patience. Impatient full impatientful trading is not good. Running candles में trade execute करना is not good, right? So have some patience while executing the trade and protect your capital with following the rules. Okay? मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. सर, आप लाइव चैट के अलावा किसके साथ बात कर रहे हो? मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. नितेश साइनिंग ऑफ. गुड नाइट, शुभ रात्रि.